Shri Rajiv Chandrasekhar. Chairman, sir, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Shri Kailash Chaudhary. माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की राज्यसभा की संशोधित कार्य सूची में मेरे सहयोगी सुश्री शोभा करंदलाजे जी के नाम के सम्मुख मत संख्या 6 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश. Sir, with your permission, I raise to lay on the table of the House papers mentions against my name, the serial number 7 on the Ministry of Textile as per the today's revised of this list. Shri Som Prakash. Inspector sir, with your kind permission, I lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 8 in the revised list of business for today. Thank you. Shri Kailash Chaudhary. माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख मत संख्या 9 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। Shri Devu Singh Chauhan. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 10 in today's revised list of business. Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Water Resources. Shri Anil Prasad Hegde. Sir, I rise to lay on the table the 19th report of the Standing Committee on Water Resources 2022-23 as listed against my name in today's list of business. Honorable members, 5 notices received under Rule 267 are held by me as to be not in order. Please take your seat. Take your seat. Please take your seat. Dr. Keshav, take your seat. All of you take your seat. Take your seat. It is for the House to decide whether it chooses to function in disorder or order or in accordance with rules. To reiterate the same thing, can you please observe some decorum? Please, please, please. No, please, sit down. Take your, no, sir. I will not allow this. There are available mechanisms to raise all issues. Pertains to me, then I must reply. Or at least you must give me a chance to reply. If you think that I should look into the books and tell me that I have not found any there in the book. Now, once that I again, can speak to you. take a seat, I'll respond. Sir, if you have a right, that right has to be exercised in accordance with the late procedure. The only procedure which is known to this House at the moment, what I have seen in, once again, last, just get up and say your way. Let me tell you, I inform the House that every decision taken by me is after due consideration of the entire record. There was a spectacle yesterday. A member came from there, here, where is my amendment? He doesn't read the bulletin. He was not present in the House when it was required to be admitted. And then raise an issue. Please, observe silence. Number 2, another member comes with the same thing. Is this the way to raise issues? One second. Sir, take. The chairman. Is there anything in the book? I challenge any member here to give me how adjournment motion should be given. Why challenge? I ask even Jetmalari to tell me. You have put all. I think House is not. I don't think House is in a mood to get with the business. I just raised a question. No, sir. I don't allow. No.
No, please, please, please. Mr. Sanjay Singh, Mr. Sanjay Singh, your conduct repeatedly is under scanner. The kind of conduct which you have shown, take your seat, take your seat, take your seat. And let me tell you, if I have to take an action at my level, I would seek to avoid it to an extreme degree. Because ultimately, I am one amongst you all. Whatever authority I wield must get support from you. If there is anything which is happening in the house, I will have to share the responsibility of it. That I have not been able to draw on the experience and talent of the house. I have interacted with the leaders yesterday. I do not appreciate disorder. I do not appreciate disorder being responded by disorder. I seek your guidance. Can we justify every unwholesome activity because it happened in the past? There. Eh? Thankful to you. Okay, please, with please. all smile and this. Let Dr. But K. you don't Keshav Rao. hear us. One second. No, I have given floor to I have given floor to Dr. K. Keshav Rao. Sir, do me a favor by two things. One, spell Sir. out what you have to indicate Out. and the premise of it. Whenever we have a doubt, we raise to ask you the same thing, nothing at all. For example, simply today a paper came and says expelled by as ordered by the chair. I totally respect because the chairman has the right to expunge anything which he thinks is not good enough to go and get into the records. But I must know which part of my speech was the practice earlier was we give that and put it in the brackets and give the asterisk down saying that expunge. Do whatever it is. At least I must know which part of my speech has gone out. One second. Let me respond. You'll have got, Nasir, you'll get enough attention. Let me respond to the honorable member. Sir. My response to the honorable member, subject to the wisdom of the house, rules are explicit. Even then, I have indicated to the members on more than one occasion, I am available for guidance of the members, not to guide them, but to seek their guidance in my chamber anytime. And I am open to correction. And I can put it to the house if there is a mechanism in place which requires to be revised, which makes members express more freely. I am prepared to do it. But to raise it in the house suddenly without taking recourse to a rule, I think is avoidable. If there is an issue and सर मैं आपको कह सकता हूं, मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि चेंबर के अंदर जिसको चाय पसंद है उसको चाय पिलाई जाए, कॉफी पसंद को कॉफी पिलाई जाए, ब्लैक टी कुछ एंड मैं फर्दर डाइवर्सिफाई कर दूंगा. एक सेकंड सर, long back when I started my political career, there was a very senior chief minister in Rajasthan from Congress party, और उन्होंने मुझे एक बात कही थी. मैं थोड़ा आक्रोश में आ गया था तब. I was a young man. उन्होंने कहा राजनीति बड़े प्रेम से करने की चीज है, इसमें आक्रोश का कोई स्थान नहीं है. और यहां इतनी साल के बाद आक्रोश के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. और अधिकांश आक्रोश मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्रति हो रहा है. मतलब सुने, मैं न इधर की सुनता हूं न इधर की, मैं तो कौन सी सुनता हूं. One second. Okay. Vikas, I'll come to you. Thank you, sir. Sir, thank you. Sir. Articulate your point, sir. Yes, sir. Yes. Sir, we all honor We'll come to you. you, sir, after members have made their input. I'll come to you. Sir, we all honor you.
We know the greatness of that chair. We respect it. 1 second, sir. I didn't hear you. I think you were saying something very pleasant. Sir, I was saying, we all respect you. We know the greatness of that chair and we want to honor it again and again. Our request is that please try to help us, to cooperate with us, to cooperate with you. Many a time we see that we have to express ourselves. This is the parliament, not a primary class. When some of us, including the LOP, to raise a serious issue, kindly allow him or anybody to express themselves. Don't make it a place where we are not supposed to open our mouth. Sir, my last point. I regard you as a referee here, a referee, and this is the parliament. The debates are going on. Naturally, emotions may spring up. So we want the referee to be a referee, not to be a player. Many a time you play as a player, not as a referee. Please. Because. 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 To this chair that the purpose of the house is discussion. Don't get yourself swayed with the finer technicalities of the rules. Good point. Rules are for the purpose of running the house and give the floor to the opposition. Yesterday we have seen how the telecast has been made. It was not expected from this house that a 50% of the telecast would be made to give someone credit without reflecting the Please. essence of others. Pramod Tiwari ji. Sir, my point of order is under Rule You are raising a point of order. 261 to 260. 1 second. Raise a little later, sir. Sir, me. Sir, यह सभापति की राय हो कि वाद विवाद में किसी ऐसे शब्द या शब्दों को प्रयोग किया गया है जो मान हानिकारक, अशिष्ट या असंसदीय या गरिमा रहित है, या हैं तो वो स्वविवेक से आदेश दे सकेगा ऐसे शब्द या शब्दों को सभा की कार्रवाई के विवरण में से निकाल दिया जाए। फिर 262 रीड विद दिस 262 राज्यसभा की कार्रवाई में से इस तरह निकाले गए अंश का तारांक द्वारा दर्शाया जाएगा और कार्रवाई में निम्नलिखित व्याख्यात्मक पाठ टिप्पणी समाविष्ट किया जाएगा। सभा पीठ के आदेशानुसार निकाला गया। मेरा सिर्फ बिना अनुरोध है सर, जो कुछ नेता विरोधी दल ने कहा वो ना तो मान हानिकारक था, इंसल्टिंग नहीं था। What is your point of order? सर कि जो भी निकाला गया है एलओपी के कार्रवाई से वो 261 260 का वायलेशन है। सर हम वायलेशन करें तब तो ठीक है सर, आपकी तरफ से अगर हो जाए तो सर वो एक गलत नजीर बन जाएगी। और शेरो शायरी तो हमेशा प्यार मोहब्बत से होती है सर, तो उसको नहीं निकाला जा सकता। और फिर निकालने की प्रक्रिया है कि वो रहेगा और कहा जाएगा ये निकाल दिया गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा है सर कि शेर और शायरी प्यार मोहब्बत से होती है या प्यार मोहब्बत की वजह से शेर और शायरी होती है। एक सेकंड सर आपने कितनी बार प्यार किया ही बता दें मुझे। सर अगर सही में जो पहले कोई प्यार आपको याद आ जाए तो उसमें शायरी तो अपने आप हो जाती है, और आपसे सब प्यार करते हैं इसलिए एलओपी की शायरी हो गई सर। तो प्यार में तो ऐसे ही होता है सर। नासिर हुसैन सर नासिर हुसैन के पहले मेरा जो ये कहना है कि जो निकाला गया गलत है, और गलत के साथ साथ निकालने की विध गलत है। आपने नहीं गलती की होगी सर, या नीचे हो गई होगी, उसको सही कर लीजिए। एक चीज आपको बताऊं सर, ये बर्डन शिफ्टिंग की बात छोड़िए सर। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म द हाउस दैट आई हैव one of the best committed and informed officials. तो we have the best committed chairman, sir. अब मैंने point out कर दिया है, तो सर गलती को मान के correct I am making this observation in the august presence of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji. He realizes, and he is absolutely a guiding factor in this,
that people who work under you, they are as good as you make them to be. Sir, But my situation is a little different. sir, They are क्या करना है मुझे? performing in exemplified manner. I work in a manner so that I don't run them down. Point taken. सर पूरी आदर के साथ, सम्मान के साथ और सबसे ज्यादा सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि 262 और 263 का जो वायलेशन हुआ सर, उसे करेक्ट कर दें, फिर से उसे कार्रवाई का हिस्सा बना दें, जिससे गलत नजीर न हो। Yes, Sir, sir. Sir, 1 second. All issues connected with Rule 267 and all issues connected with the issue of expansion of observations made here, the members who feel aggrieved or have a point of view or wish to make an input or suggest modifications or give us a way forward approach may see me, may spare time. I invite all of them in my chamber in the afternoon today. 1 second. Nasir Hussain. गुस्सा होकर घर से आएगा तो पूरा भाषण ही निकाल देगा, इसलिए ये नजीर न बने। ऐसा फिर मैं कह रहा हूं, ऐसा आपको गुस्सा आता नहीं। ऐसा प्रमोद जी, जो कुछ आपने मेरे लिए कहा है, मुझे नहीं लगता कि आपके मित्र एग्री करते हैं। ये नासिर हुसैन सर, नासिर हुसैन नासिर हुसैन एन अपॉर्चुनिटी सर, लगातार हम लोग 267 के तहत ये एक इशू पे हम लोग नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात सुने। या तो हम लोग को बता दीजिए कि दिस इशू डजंट हैव एनी मेरिट, you are not allowing a discussion. Either you tell us that this issue doesn't have any merit, or you tell us that our notice is not in conformity with the rules. If it is not in conformity with the rules, then please explain to us how we should write the, how we should give the notice. If it doesn't merit any attention, that we can understand that is the government's position. I request you, please give us an opportunity to discuss that issue, because that involves crores and crores of money of people that has been invested in SBI, LIC and other financial institutions. Sir. Please allow us a discussion. Don't use it as a Please allow us a please. discussion on that. Please. And we have been giving notice, sir. हर दिन 11, 12, 15 लोग नोटिस दे रहे हैं सर। नासिर टेक मान्य सदस्यगण, टेक योर सीट। मान्य सदस्यगण, सुनिए, you made your point, Nasir. Take your seat now. Take your seat. Nothing that is you going should to tell record. us. Take your seat. मान्य सदस्यगण, एक सेकंड, पहले, but let me say, had your point. मान्य सदस्यगण, पिछले कुछ दिन से मेरे सामने दो समस्या आई हैं। Two issues have come up very promptly before me. सबसे पहले तो मैं मानकर चलता हूं कि माननीय सदस्यगण ने कानून बनाए हैं, माननीय सदस्यगण को पता है उस कानून का क्या मतलब है, उस कानून के तहत किस तरीके से काम करना है। बहुत से सदस्यगण ने आज भी कहा, पहले भी कहा कि आप हमारा एक फॉर्मेट बना दीजिए कि इसमें क्या क्या चेकलिस्ट हो। माननीय सदस्यगण, ये करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। नियम आपने बनाए हैं, नियमों में सुधार करना आपका काम है। रूल 267 को परिभाषित आपने किया है। रूल 267 के अंदर आपने 3 बातें कही हैं। पहली बात आपने कही है कि यू विल सीक परमिशन टू मूव अ मोशन, एक में नहीं हुआ है। नंबर टू, यू विल स्पेल आउट डिटेल में आप कौन से रूल का सस्पेंशन चाहते हैं। यह करने के बाद एक तीसरा रिक्वायरमेंट भी है कि आप ये कहोगे कि हमने विचार कर लिया है इस मुद्दे को जो हम 267 में रेज करना चाहते हैं, कानून की किताब में और कोई प्रावधान नहीं उसको रेज करने का। मैंने आपके हर नोटिस को देखा है,
और जब आप लोग मेरे से मिलने आओगे सब मेरे पास रखूंगा। किसी के अंदर ये पूर्ति नहीं की गई है। अब दिक्कत क्या आ गई कि सदन के वरिष्ठ सदस्य भी हैं नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बाली विजिट के बारे में एक वीडियो क्लिप का उपयोग किया और वीडियो क्लिप का उपयोग करते हुए उनके जो 3 लाइनें हैं वो ठीक नहीं थी। मैंने उनको मौका दिया कि यू प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और कल अपने हार्वर्ड की चर्चा की थी, वहां पढ़े हुए भी हैं। नहीं किया, मैंने दोबारा आगाह किया, नहीं किया और 3 बार के बाद मेरे चेंबर में आ गया, मुझे एडवाइस करो। उस बात को चेंबर की मेरे उनकी बीच की बात थी, पर यह बात उन्होंने चिट्ठी में लिख दी। यह बात उन्होंने चिट्ठी में लिख दी कि आई sought advice of the honorable chairman. Sir, I am not here to give advice. I am here to follow the rules. The rules are your product. आप देखिए कल क्या हुआ। परसों इस हाउस में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक वक्तव्य को कोट किया गया by very responsible senior members, by honorable leader of the opposition, by honorable finance minister. सुनिए, मैंने दोनों को कहा, माननीय सदस्यगण सुनिए, मैंने दोनों को कहा, would you take your seat now? Would you take your seat? No, take your seat. Honorable members, you would recollect, I did not comment. I said 2 very distinguished speakers, one a minister, another leader of the opposition, have said something which was articulated according to them by the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji. And they were referring to a video. I said authenticate it. Honorable Finance Minister complied the same day. I would still urge the leader of the opposition that I think somebody in the party will advise Jairam Ramesh ji to little look to the rule book, listen to the chairman when he is on his feet, and then understand what has been said. I urge, request, and plead with everyone in the house whom I have, in discharge of my duty, given a direction to put a document on table of the house. Those who have not, honorable members, honorable members, honorable members, honorable members, it is my prime duty. Nasir, please take your seat. No, take your seat. You are forcing me. No, I will have to name you. Take your seat. No, I am on my chair. Take your seat. Honorable members, let me share it with you. I'm not making an issue of it. I bear a lot without sharing it with you. I had decided that once the proceedings of the House will be adjourned for the next remaining part of it, I will invite all of you. What I see every day, a communication sent to me, 2 minutes, it is on Twitter. A communication sent to me, I'm yet to take a call on it, frontline, hitting the headlines. And an observation so crude that expunction has been taken by me, and we know who are the people who issue orders. I sidestep these things. These are very serious matters. These matters can lead to great consequences. Honorable members, yesterday,
against a directive that was imparted earlier. There was video recording in the house. Members recorded it. That is on Twitter. Imagine what are the consequences of it. And still, I wish to settle these issues, not in the house, in my chamber. So please cooperate with me. Honorable, one second, but please listen to, please, Honorable Leader of the Opposition, please. No. आप बोलो, माइक खुला please. Now, one second. Now, I think honorable members, one second. Please lend me your ears. Honorable members, those of you who carry an impression that I do not act in even-handed manner, please see the proceedings. I do not approve disorder or counter disorder. I have said so yesterday, and I tried my utmost yesterday so that we can initiate our discussion on the budget and people of the country can be enlightened by both sides. And therefore, if I suffer every time that you are treating this side differently, then ask this side what they feel. I neither look at this side, nor this side, nor in the middle. I look at Constitution. Leader, please, 1 second. Leader of the House, one second. Leader of the House, persuade your members to listen to what LOP says, so that we can go ahead. Request your members to take their seat and listen. I'm controlling the House. Ma'am, please. I request Leader of the House to prevail upon his members to ensure that everyone in the House and Leader of the Opposition and floor leaders, because what I had seen yesterday from all of you was something. Dr. John Britas, I greatly admire and respect your energy. It should not be unregulated. Even a nuclear power has to be regulated to be effective. So, if I have called upon Leader of the House
Same applies to leader of the opposition and every floor leader and every member of this house. I'm calling. Yes. One second. One second. You don't allow your member of. What is this? What is this? What is this? What is this? No member in the house can have a document to be shown to me in the manner they seek to. Either placard. All will be treated with. एक बात इस हाउस को मैं एक बात बताना चाहता हूं और बड़े भारी मन से बताना चाहता हूं. Every transgression both sides will not go without my deep reflection. और मैं आपको ये बता सकता हूं, मेरा परम कर्तव्य है विश्व के सबसे बड़ी संस्था के अंदर मैं चेयरमैन हूं. कोई भी कदम उठाते समय ये नहीं देखूंगा वो कितना गंभीर है, ये देखूंगा क्या कानून की परिधि पर खरा है. और इसके लिए मैंने कई मौके दिए हैं लोगों को, माननीय सदस्यों को मैंने बुलाया है, यहां डायरेक्शन दिए हैं, मिन्नत की है, पर इस चेयर के पास अधिकार संविधान ने दिए हैं. I appeal to all of you to listen in rapt attention to leader of the opposition and leader of the house. And if thereafter I find and I would urge both the leaders, leader of the house and leader of the opposition, not to get into political mode, not to get into the past baggage. They must enlighten me. They must guide me. How do I move ahead today? Leader of the house. Honorable Chairman, sir, yesterday we saw the greatest contempt of this house and the people of India with the abject behavior of many of our colleagues over here. And we saw the chair being disrespected despite your earnest appeals on more than one occasion. We saw very senior leaders of various political parties behave in utter contempt of the chair, sir. They behaved in a manner which was derogatory, and possibly they may have their viewpoint, but your suggestion in their viewpoint, we were talking about our leader, maybe they are talking about their leader. Whoever is their leader, they were taking slogans of their leader. Our people were taking slogans of our leader. But in the process, the Honorable Prime Minister was heckled, misbehavior of the highest order by the members from the opposition side, and obviously tempers ran high. The members of the ruling party were requesting for an apology which was not forthcoming from any of the leaders of the opposition, and therefore, sir, with the behavior that we had seen yesterday of the Prime Minister, with the fact that every rule of the House has been in contempt, with the fact that your own instructions are being totally disobeyed, I don't think the leader of the opposition should continue with the rest of his comments until he first gives an apology on behalf of all the opposition. कल से रूल 38 के तहत और रूल 238 और रूल 38A के तहत मैं यहाँ पर
पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर मुझे करने नहीं दिया। हम आपको तो रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। हमारा जो भी गुस्सा होता है वो सरकार पे होता है और आपके ऊपर नहीं। हम जो भी कुछ कहते हैं उनको सब आपने मेरे 6 पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया और अभी प्रमोद तिवारी ने बताया कि ऐसा एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि इस जो 6 पॉइंट में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो अनपार्लियामेंट्री है। जब यह अनपार्लियामेंट्री नहीं है तो इसको एक्सटेंड कैसा कर सकते हैं? और हर एक चीज को पहला पॉइंट है आपको चुप्पी साधने की वजह से और मोनी बाबा बनने की वजह से ये परिस्थिति घट गई। तो मोनी बाबा तो आप हमारे Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. No, nothing. Nothing will go on record. I wish because I would have seen your reaction yesterday. No. I very much wish and desire that you would have been in the same mode yesterday also. I did not see you rise for a single time. You are a senior advocate, very distinguished person with long track record of public life. Sir, we will have to be even-handed. One second. We have to be even-handed. Please. If the House decides that we don't wish to function, you can say so. Why I rose? Please take your seat. All of you take your seat. All of you take your seat. Take your. One second. One second. Honorable members. I gave floor to the leader of the opposition. He raised an issue. But, sir, I need your guidance. You started reading what I had expunged. No. Honorable members, the leader of the opposition has sent a communication to me. He has made reference to these rules in the communication also. Anything coming from leader of the House and leader of the opposition merits immediate attention, consideration, and all inputs are secured. So I have had the benefit of going through the rules. And the leader of the opposition read them within his domain. What I object, and to use the word object for leader of the opposition or leader of the House is very different. Leader of the opposition, he started reading the portion which I had expunged. Would you approve it? No, sir, nothing will go on record. Now, no. I cannot countenance such an outrage of the rules. No. Nothing will go on record except what the chair says at the moment.
Shri Dr. V. Shivasadan, 0 hour. Sir, Dr. V. there is an Shivasadan. there is an urgent need to address the issue of the unemployment, sir. Here the government is telling they will provide the jobs. But the thing is that, sir, lakhs of employment, lakhs of vacancies are vacant in the country. So it should be addressed. Sir, in railway, military, and everywhere, the posts are laying vacant, sir. You see the points. I have asked the question to the Prime Minister, Honorable Prime Minister, about the vacancies, and I got the reply. There is a 9,79,327 posts are lying vacant in these various ministries and departments. Sir, this government is not creating the jobs. They are destroying the existing jobs, sir. Sir, I have a data given by the government. The data, sir, you please look at the data. In 2016-17, there were 11 lakh and 11.5 lakh regular employees in central public sector units, sir. But what is the existing situation? What is the situation now, sir? The data by the government says that it has come down to 8.6 lakh. The Labor Ministry has given this data to me in this house, sir. It means that 3 lakh jobs has been destroyed by this government, not only in the public sector companies, even in the central services also. Proper recruitment is not happening here, sir. Look at the condition of Indian Forest Service. Sir, there are 1,006 vacancies. 1/3 of the posts are lying vacant, sir. We are discussing increasing problems of man-animal conflicts, sir. But it is the fact that there are not enough officers and officers to manage our forest. Sir, look at the condition of Indian Economic Service. There are 105 posters. Vacancies are lying, sir. Sir, 1/5 of the posters are lying vacant. Again, the recruitment is coming down year by year. This shows the lack of seriousness about the economic policy of the government, sir. More than that, sir, it seems that this government is planning to kill some services. Look at the condition of Indian Economic Service. In 2007, there were 111 recruitments, sir. But still, the number of vacancies is 356. Even there are vacancies in government is not ready to fill, sir. In economic service, in forest service, in information service, the vacancies are there, sir. So you please look the matter. Shri Dipender Singh Huda. सर, ये मैं एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा ओबीसी की क्रीमी लेयर के लिए उठाने के लिए मैं खड़ा होना चाहता था, जो हरियाणा सरकार ने 8 लाख से घटा के 6 लाख कर दिया। लेकिन अगर हमारे नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, Take your seat. Shri Vijaypal Singh Tomar. No, you are not availing it. Nothing will go on record. सभापति महोदय, धन्यवाद। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न मुख्य शहरों को घरेलू हवाई सेवा से जोड़ने का निश्चय किया है। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य शहर है, जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ से 58-57 की आजादी की क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसकी याद में शहीद स्मारक एवं म्यूजियम बना है तथा बाबा अमरनाथ मंदिर पर्यटन केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। मान्यवर महाभारत काल की राजधानी हस्तिनापुर मेरठ में स्थित है और पांडवों के समय के वारणावरात विदुर कुटीर, परीक्षित गढ़, शुक्रताल आसपास ही सब स्थित है। मेरठ खेल के सामान का देश का दूसरे नंबर का हब है तथा विश्व भर में क्रिकेट के लिए मेरठ में बैट और बॉल के प्रयोग किए जाते हैं। इसके अधिकांश खिलाड़ी सामान खरीदने आते हैं। मेरठ जिले में ही एशिया का ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मेरठ से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ करीब 550 किलोमीटर है। मेरठ से इलाहाबाद हाई कोर्ट करीब 750 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के बाबा विश्वनाथ का मंदिर 850 किलोमीटर है और गोरखनाथ धाम 800 किलोमीटर है। मान्यवर यात्रियों को मेरठ से जाने में 12 से 20 घंटे का समय लगता है।
यात्रियों की परेशानी का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, मेरठ में हवाई पट्टी है जिससे वहां पर चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर उतरते हैं। मेरठ जिले में देश के विभिन्न शहरों को हवाई यात्रा शुरू करने से दिल्ली हवाई अड्डे पर भी एयर ट्रैफिक और यात्रियों का दबाव कम होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरठ की हवाई पट्टी का विस्तारीकरण कर उड़ान योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न शहरों को मेरठ से घरेलू हवाई उड़ान शुरू की जाए। धन्यवाद। श्री सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो परंपरागत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, न्यूज चैनल्स हैं, संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उनको समाचार संकलन करने, उसकी सच्चाई का पता लगाने, कंटेंट क्रिएट करने के लिए पत्रकार, रिपोर्टर्स, एंकर्स, कैमरामैन, न्यूज रूम ऑफिसर्स पर अरबों खरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इनकी आमदनी का मुख्य स्रोत विज्ञापन है, परंतु हाल के वर्षों में टेक जायंट्स जैसे फेसबुक, गूगल, यूट्यूब के उदय के बाद विज्ञापन का बड़ा हिस्सा टेक जायंट्स के पास चला जा रहा है। ये जो बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म है, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के न्यूज कंटेंट को दिखाते हैं और उससे विज्ञापन के माध्यम से पैसा कमाते हैं। इन बिग टेक को न्यूज कंटेंट तैयार करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, परंतु तैयार कंटेंट को ये मुफ्त में दिखाते हैं। गूगल इंडिया की विज्ञापन से ही इनकम 2021-22 में 24,927 करोड़ तथा फेसबुक की 16,189 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 75% ज्यादा है। आवश्यकता की इन बिग टेक को बाध्य किया जाए कि विज्ञापन के रेवेन्यू को ओरिजिनल न्यूज कंटेंट बनाने वालों को शेयर करें। श्रुति महोदय, 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड बनाकर एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू शेयरिंग के लिए बाध्य किया था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ईयू ने कानून बनाया है। न्यूजीलैंड भी कानून बनाने की पहल कर रही है। सत्य महोदय, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि डिजिटल इंडिया एक्ट जो भारत सरकार लाने जा रही है उसमें इसका प्रावधान करे और कंपटीशन कमीशन इसमें हस्तक्षेप करे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ईयू, कनाडा के समान कानून बनाए ताकि गूगल, फेसबुक को एडवर्टीजमेंट की आय के रेवेन्यू शेयरिंग के लिए बाध्य किया जा सके, ताकि भारत के प्रिंट और न्यूज टीवी चैनल को आर्थिक संकट से बचाया जा सके। सत्य महोदय, आत्मनिर्भर भारत नीड्स आत्मनिर्भर न्यूज इंडस्ट्री। सत्य महोदय, ये जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब न्यूज बार्गेनिंग कोड आया तो फेसबुक ने और गूगल ने उनको धमकी दिया कि हम ब्लैकआउट कर देंगे। उनको महीनों तक ब्लैकआउट करने की धमकी दिया, लेकिन कनाडा उससे, ऑस्ट्रेलिया उससे बाज उसके का झुका नहीं और उसे कानून बनाया, मीडिया बार्गेनिंग कोड। और आज ऑस्ट्रेलिया के मीडिया को अरबों रुपए की आय हो रही है, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट है उसके रेवेन्यू शेयरिंग के द्वारा। श्री आदित्य प्रसाद। आदरणीय सभापति महोदय, मैं झारखंड राज्य से आता हूं। झारखंड राज्य नदी, नाला, पहाड़, पर्वत वाला राज्य है, लेकिन विगत 3 वर्षों से झारखंड राज्य में गैरमजरूआ जमीन की नेचर बदल करके खरीद बिक्री का काम किया जा रहा है और लगभग 3,62,867 एकड़ जमीन में का अवैध कब्जा जमाबंदी किया गया है और 1,75,000 इस प्रकार के मामले पूरे राज्य में लंबित हैं और सभी राज्यों में इस प्रकार के जमीन का घोटाला चल रहा है। और मैं जिला का बात करूं तो बोकारो जिलों में अकेले 96,150 एकड़ की जमाबंदी 50,662 लोगों के बीच में किया गया है। जमीन की लूट मची हुई है। जिस प्रकार से गैरमजरूआ जमीन का वहां पर लूट बचाया जा रहा है, कभी भी सरकारी कोई योजना यदि झारखंड में जाती है तो मुझे लगता है कि उस राज्य में सरकारी योजनाओं को धरातल में उतारने में काफी कठिनाइयों का सरकार को सामना करना पड़ेगा। महोदय, तत्कालीन 1980 और 82 की सरकार ने वहां पर रांची जिला के और मांझी प्रखंड के मुट्टा गांव में
भूमिहीन परिवारों को 100 एकड़ जमीन आवंटन देने का काम किया था, लेकिन राज्य की सरकार के संरक्षण में सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोगों के इशारे पर तो अवैध जमीन का कारोबार करते हैं, वैसे लोग वहां पर जो भूमिहीन जमीन को जिस पर खेती बाड़ी करके अपना जीविकोपार्जन करने का काम कर रहे हैं, और उसे परिवार के सदस्यों को लोग डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं और भूमि खाली करने के लिए हमेशा दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। वैसे भूमिहीन परिवार के सदस्य काफी डरे हुए समे हुए हैं। मैं सभापति महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि वैसे जो जमीन का अवैध कारोबारी सत्ता के संरक्षण में बैठे हुए लोगों के दबाव में किया जा रहा है, वैसे लोगों पर जांच करा करके कार्रवाई करने की कृपा की जाए सक्षम एजेंसी से। इस प्रकार का अवैध कारोबार बहुत तेजी के साथ झारखंड राज्य में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुजीत कुमार। Chairman, sir. Sir, my concern is about the new population criteria for the establishment of the Ekalabya Model Residential Schools, EMRS, and the non-operation of several EMRS across the country. Sir, as per the revised guideline released by the Ministry of Tribal Affairs in 2020, the criteria for setting up a EMRS in a sub-district is that the ST population of that sub-district should be 50%, and the tribal population should be at least 20,000 in that sub-district. Sir, the Standing Committee on Social Justice and Empowerment, in its 31st report submitted in April 2020, titled Review of the Functioning of the AMRS, highlighted that the above population criteria is very unfair and discriminatory. Because, sir, we know that there are several tribal pockets in this country, several sub-districts which are substantial tribal population, may not be 50%, maybe 40%, 35%, 45%, but they are deprived of the AMRS school because of this new population criteria. Even the 41st report of the said committee in its report of December 2020 has also flagged and expressed its concern about the same issue, sir. Sir, I'll give an example. In the state of Odisha, in the Palada block of Angul district, the ST population is 39.21%. In Kankadahada block of Dhenkanal, the ST population is 42.6. In Paikmal block of Bargarh district in Odisha, the ST population is 35.6. In Barkot block of Devgarh, the ST population is 31.7. Now, sir, what is the fault of the tribal children of these blocks? Just because the ST population of the block is not 50, they are deprived of good education. Sir, is it fair? I don't think it is fair, sir. It's a very, very good scheme. It's an excellent scheme, sir. But because of this arbitrary population criteria, poor tribal children are being punished and deprived of their economic and educational empowerment. So the other issue I wish to raise is that according to the website of the Ministry of the Tribal Affairs, it is disheartening to see that of the 104 EMRS schools sanctioned for Odisha, only 34 are functioning, 32, sir. 72 are non-functional. Sir, now the Honorable Finance Minister during his budget speech highlighted that in the next 3 years, the center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 EMRS, serving 3.5 lakh tribal children, which is highly commendable, sir. But, sir, how is this lofty goal going to be fulfilled when the schools are non-functional, when the school buildings are yet to be complete? So, sir, through you, I would like to revise this new population criteria and complete all the schools and make them functional. Thank you. Shri Khiru Mahto. सभापति महोदय, बीएमटी जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खनन प्रभावित क्षेत्र में पेयजल, शिक्षा, सड़क, रोजगार एवं अन्य विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से किया है, जिसमें फंड की व्यवस्था कोयला व्यवसाय से 30 रुपये प्रति टन कटौती की जाती है। झारखंड राज्य के रामगढ़ जिला में खनन प्रभावित क्षेत्र मांडू, चितरपुर, पतरातू ब्लॉक है, लेकिन इस जिले में इस फंड का जिला समाहरणालय में 1.5 करोड़, स्विमिंग पूल में 4 करोड़, टाउन हॉल बनाने में 2 करोड़, फर्नीचर में 8 करोड़
पार्क में 2.75 करोड़, इंडोर स्टेडियम में 7.5 करोड़, बाजार टाड़ में स्टेडियम निर्माण एवं 232 करोड़, टोटी झरना सौंदर्यीकरण तथा करोड़ रुपये सदर अस्पताल के सामानों की आपूर्ति करने में खर्च किए गए हैं। जिले में कर्मचारियों एवं आउटसोर्सिंग से बहाल कर कर्मचारियों के वेतन इसी फंड से देने की चर्चा भी जोरों पर है। उपरोक्त सभी कार्य डीएमएफटी फंड के मानक नियमों तथा ग्राम सभा से स्वीकृति लिए बगैर खान प्रभावित क्षेत्र की जगह शहरी क्षेत्र में किया गया है, जबकि खनन प्रभावित क्षेत्र मेरे गांव से हाउसिंग मोड़ से केरला बस्ती बाजार टाड़ तक लगभग 4 किलोमीटर जहां मेरा घर अवस्थित है, एवं दूसरा 40 वर्ष पूर्व बने नवाडी केरला परियोजना कार्यालय होते हुए झारखंड परियोजना से लइयो परियोजना तक लगभग 8 किलोमीटर पक्की सड़क काफी जर्जर है, जिसमें 20 गांव के भू विस्थापित लोग प्रभावित हैं। उपरोक्त रोड को बनाने या जिले में डीएफटी फंड के इस प्रकार के दुरुपयोग होने की जांच हम भारत सरकार से करते हैं। श्री संतोष कुमार पी। Sir, I demand a detailed probe into the dealings and transactions of Railway Development Authority, and I also demand the cancellation of a recently executed deed by the Indian Railway to hand over 7 acres of land for 45 years to a private company. Since the house is not in order, I don't want to continue with my speech. I urge the minister concerned through you, sir, to take necessary steps to initiate a probe into the allegations against ILD, Railway Development Authority. Dr. Sumer Singh Solanki. जी धन्यवाद माननीय सभापति महोदय नर्मदे हर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के साथ संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में एक विकट स्थिति बनी हुई है। दिव्यांग नागरिकों के हाथों के अंगूठे, उंगलियां तथा आंखों के न होने के कारण आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जिस कारण उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं जैसे आयुष्मान कार्ड, मोबाइल कनेक्शन, राशन, पेंशन इत्यादि सरकारी योजनाएं जिसमें आधार कार्ड की अनिवार्यता दी गई, उनका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में हमारे देश के कुछ महानगरों में ही फेस रीडिंग के माध्यम से आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया संचालित है, जो कि हमारी सरकार का एक सराहनीय कदम है। परंतु देश के कोने कोने में निवास करने वाले दिव्यांगजनों की पहुंच इन महानगरों तक नहीं है, इसलिए दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांगजन आज भी अपने आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। कुछ दिव्यांग भाई बहनों के आधार कार्ड बन भी जाते हैं तो उन्हें भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोग किसी न किसी प्रकार की दिव्यांग जना की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 91 श्री निरंजन बिशी। Question number 91. Honorable Minister. Sir, a statement is laid on the table of the House. Question over. Will the minister conduct an independent review cum impact assessment of the addictive betting, violent gambling and adult website which are still operating under an alternative domain, and to ban those websites with immediate effect? Honorable members, everyone in the world, you are forcing me to name you. You are forcing me to name you, honorable members. You are forcing me to name you. I hope you go back to your seats. Don't force me to name you. Please. Please. No. Mr. Randeep Surjewala, you are in the well. All right.
All right. Honorable members, I would like to avoid it. I again appeal to you to go to your seats. If I name, sir, I appreciate Jairamji that you have chosen not to be in the well. I appreciate that. No, I don't. I want everyone to be on their seat. Nasir Hussain. प्रताप इमरानगढ़ी, केतकर जी, रमेश, राजीव रंजन, मैडम रंजना, सभापति जी, रणदीप सुरजेवाला, प्रजातंत्र की आवाज जयराम रमेश, अडानी मिस्टर तुलसी, मिस्टर वेणुगोपाल, मिस्टर प्रदीप भट्टाचार्य, I think, Mr. Jairam Ramesh, you will have to be permanently stationed in Harvard to understand rationality of what I do. I name all these persons, Madam Yagnik, Mr. Neeraj Dagni, सर, Dipender Huda. लीडर ऑफ द हाउस को दो तीन दिन बाद चांस देते I request you to go to your seats. I would not like that you continue with your disorder. It will be appropriate. All right. I name all these people to withdraw from the house. हम लोग जो लैंड करते हैं हम पे एक्सपेंड करते हैं With a heavy heart, I would like to move a motion that in view of the disorderly behavior and लीडर ऑफ द हाउस क्या बोलेंगे लीडर ऑफ द हाउस को बोलने देते नहीं लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने देते नहीं लीडर ऑफ द हाउस को बोलने देते नहीं Honorable Chairman, sir, and since it seems that they do have some regret, maybe instead of taking action right away, I would urge you to call the leaders for discussion in your chamber, and then we will see if they are at all interested in maintaining order. Honorable members, the last thing I would ever like to do is Nasir Hussain, Mr. Nasir Hussain, you are in the well and speaking at a time when I am on my legs. Keep quiet, please. Please. Honorable members, the last thing I would want, leader of the opposition, the last thing I would want is to direct that a member does not participate in the proceedings of the House. Because the moment the member does that, the member outrages the confidence of the electorate. The member is taken not to be doing what the electorate expects him. Those who got him or her elected. Honorable Leader of the Opposition, Honorable Leader of the Opposition, no, Honorable Leader of the, one second, Honorable Leader of the,
let me put the record straight. Honorable members, please. Jairam Ramesh, at least when your leader of the opposition is speaking, you can observe some silence. At least during that time. I know it has become a chronic habit. Chronic habit. It has been diagnosed by this house. Treatment has to be elsewhere. Ranjita ji. अब सर आपसे एक अनुरोध करूं, आप अपने सदस्यगण को अपनी कुर्सी पर जाने दीजिए। नहीं सर, पहले कुर्सी पर जाइए। वेणुगोपाल जी पहले कुर्सी पर जाइए। मैं बोलूंगा फिर देखना, बट कुर्सी पर जाइए। कुर्सी पर जाइए। Take your seats. Take your seats. Take your seats. I'm at least grateful that you saved me from taking the most unpalatable decision. Now, Honorable LOP has raised an important issue that after I called the leader of the house, I called him to speak and then I rose. Honorable members need to know why I so conducted myself. If the leader of the opposition, with my permission, was speaking, why did I get up? I got up because leader of the opposition started reading the portions I had expunged. Now, can that ever be allowed? No. I will give floor to the leader of the house, leader of the opposition. But if they act in a conduct this side or that side, and that is in offense, outrageous disregard of my direction, and in respect of which I had already this morning indicated that if members have another perception, we'll find a way out. And time has been scheduled in the afternoon for that interaction in the chamber. Now, I think I am on a firm ground. If any member, leader of the House or leader of the opposition, seeks leave of the chair to take floor and then reads the portions that have been expunged. No. Secondly, all of us get agitated sometimes. We get emotive also, perhaps on account of disagreement. Perhaps we consider the other side is not reasonable. But does it look nice? The leader of the opposition, by body language and words, followed by his very senior colleagues, labels all kinds of allegations against the chair, day in and day out. No, sir, no. No, I will not be there. All of us, I request, let me tell you, the respect which leader of the opposition has, in my estimate, will never go down. He has earned it over decades, but I am entitled to reflect and reveal my feelings. Many people tell me that how come this is happening? I can't equate leader of the House and leader of the opposition with all members are equal. They belong to the August House. What I have seen, you see. Now, I don't want to use the word shout, but that is what I face every day. Please think about it. And may I make an appeal to both sides? This side also. Please don't find justification for every wholesome wrong activity from the past.
Let us not. I requested all of you, let us leave the baggage of yesterday behind. I know what happened yesterday. The world knows it. The Prime Minister of the largest democracy was on his legs. And I had the occasion, people coming so close to me. I could have taken recourse. Even today also I am thankful. I am thankful to wiser counsel that I will save. May I please request all of you to permit me at the moment to take only the listed business. And then I invite floor leaders for a near brainstorming session, and only the floor leaders, so that in that group we can deliberate, discuss, and come out with a formulation. I will be open to anything, including immediate directions by me, and I can assure this House, when I reacted that I can be unlisted, I said can't be unlisted by them or this side. And I can never be enlisted by anyone to do a job. May I now request all of you to take enlisted business? And please, Sir, let me tell you, honorable members, I sometimes find that by series of actions, we are normally in aggression. I am. But Venugopal is beating me hands down. Sir, no, don't do it. Don't do it, sir. Sir, don't be that aggressive. Whatever you say, let me tell you, Venugopalji, whatever you say is heard, keeping in view that you are a member of this august house and a senior member of the party. So if you raise your lung power, not good, sir. Whatever you will say silently, I put this on. So may I start with the listed? Supplementary one, honorable member. In the chamber. Will the minister conduct an independent review cum impact assessment of the addictive betting, violent gambling, and adult audience websites which are still operating under an alternative domain, and to ban those websites with immediate effect? Honorable Minister. So I thank the member. Sir, I thank the member for raising this question. I want to just... 1 second. 1 second, Honorable LOP. Take your seat. Honorable LOP has to say something. Sir. 1 second. Please. Sir. Listen to the Honorable LOP. And I would appreciate the House to do it in rapt attention. No, please. You don't want to listen, then Please. Leader of the opposition, leader of the House, and every member will be heard in rapt attention. And if that does not happen, both sides are forcing me to act. Please, leader of the opposition. Sir, एक minute बैठो. Please. Sir, I raised certain points as per rules only. And why it is prejudiced towards me, I don't know. Sir. 1 minute. Sir, you can expunge my word, you can expel, you can dismiss me from membership. But I want to tell my feeling. I want to tell my feeling. And when Sorry. Take your seat, sir. Take your seat, sir.
Honorable Minister, Honorable Minister. Sir, sir, I thank the member for asking this very important question, but I would like to clarify a certain number of things before I get to the supplementary, sir. Sir, I think you get to the supplementary. Sir, No, get to the supplementary only. Because the question is a little bit erroneously framed. Because he talks. Honorable Minister. I respect you, sir. Honorable Minister. Sir. I try to take as many questions as possible. Agreed. Therefore, you have had the opportunity to give your response in writing. Agreed. The honorable member is expecting response only to the supplementary. Only to the supplementary. Sir, the honorable member has asked some questions about online gaming apps and other apps that are addictive. And I would just like to clarify that the government of India's policies are to make sure that the internet remains open, safe and trusted and accountable for all digital Nagriks. And the apps that he refers to are onboarded by the operating environments like iOS and Android, which are outside the government domain. But whenever a nodal officer reports an application that causes harm or is illegal or causes any other criminal impact, the under Section 69, the committee takes an action to block those applications immediately. As far as online gaming is concerned, sir, he is aware that there are rules that are going to be prescribed for online gaming shortly, and those will address the issue of illegal betting that is available on the internet, sir. Second supplementary. Whether Honorable Minister is planning to introduce a standard operating procedure for the online loan application to protect the privacy concern of its customer. Honorable Minister. Sir, the online loan apps that the honorable member has referred to are regulated by the Reserve Bank of India, sir. And as far as the government of India is concerned, like I said, sir, our objectives through rules and the law is to ensure that if there is any instance of safety and trust or reciprocally user harm or criminality, then the committee takes actions, identifies the apps and blocks those apps under Section 69. Shri Brijlal. चेयरमैन सर, चाइनीज ऐप जो है कुछ जो बंद किए गए, प्रतिबंधित किए गए, लेकिन फिर ये क्लोनिंग करके दूसरे रूप में चालू हो जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो क्लोन ऐप्स हैं उनके निगरानी के लिए उसको प्रतिबंधित किए क्या उपाय किए? This is the point I was making. This is the point I was referring to in terms of the context. Sir, we do not ban apps or block apps based on its jurisdiction. There is no attempt by the government of India to selectively block apps based on the origin of the app. The apps that are blocked based on illegalities, user harm or criminalities that the app demonstrates. Mr. Tambidurai. Chairman, sir. Honorable Minister said regarding the online game. Sir, ask your question. I want to proceed. You are a senior man. I'm asking. Directly question. I'm directly putting, sir. In Tamil Nadu, because of online game, many people committed suicide. Therefore, that is why we are requesting whether the government will come forward to ban this kind of Honorable online Minister. scam, save the people of innocent Honorable people Minister. are losing life. So, sir, without getting into an explicit assurance, I can assure the honorable member, we are seized of the issue and the menace of online gaming, and we are committed to making sure the internet is safe and trusted for all digital Nagriks, including those in Tamil Nadu. Sujit Kumar. Sir, recently the government order issued for banning 138 betting apps and 94 lending apps. Now, I do understand from the reply of the Honorable Minister that the government is not in the business of banning apps. Only under 69 of the IT Act it can be done. Now, all of these apps which have been banned have Chinese links. Now, how come so many apps, 138 plus 74, it's a huge number, 94. How come so many apps have Chinese links, and why ban them only when Honorable you have Minister. Malaysia designs? First of all, it is incorrect to say all the apps have Chinese origin. We have detected certainly amongst the apps banned a number of apps that are Chinese origin. But like I said, sir, the apps are onboarded not by the government. It is onboarded by the operating system of iOS in the Apple case or Android in the case of other phones. So the app Play Store and the App Store are the ones that onboard apps. It is the government through its nodal officer and the committee, review committee,
that ensures that when apps are reported to be violative of Indian law or cause harm or criminality or illegality, that then we take action under Section 69 to block those apps and access to those apps in Thank India you. to the digital Nagriks. Question number 92, Shri K.C. Venugopal, absent, Honorable Minister. सभा पटल पर रखा हुआ। Shri Mohammad Abdullah. Thank you, Chairman, sir, for allowed me to ask the supplementary question on question number 22. Sir, whether it is a fact that the Union government not yet issued a mandatory quality certificate to more than 150 Chinese companies for selling toys in India, and if so, how many of them had been issued notice to apply for it? Honorable Minister. And whether the import of Chinese toys without quality certificate will be banned? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं सदस्य को बताना चाहती हूँ 2014 के बाद से, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर संभाली, उस समय से बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, मैं डायरेक्ट रेस्पॉन्ड टू द इशू, डायरेक्ट मैं कोट जरूर कर रही हूँ। 2000 ये हमारे अभी 1 जनवरी 2021 में सुरक्षित खिलौनों के लिए एक कानून लाया गया, जिसके तहत बच्चों का नुकसान ना हो। दूसरा, सदस्य ने जो पूछा है कि क्या इसके लिए नियंत्रण किया गया है, जी हाँ, किया गया है। भारतीय हमारे जो खिलौना बेचने वाले लोग हैं, उसमें से घरेलू कंपनियों को 1033 और विदेशी कंपनियों खिलौना बनाने वालों को सिर्फ 30 लाइसेंस दिया गया, जिसमें चाइना का एक भी कंपनी नहीं है। श्री वी विजय साई रेड्डी. Thank you, Chairman, sir. Sir, whether the government is also conducting an assessment of the toys that have been captured without BIS mark to find out how they can be hazardous to the children's health, to create more awareness among Honorable the parents. Minister. Thank you, sir. माननीय सभापति महोदय, कुल छापे 100, कुल जब्त किए गए खिलौने 39,794। राज्यवार ब्यौरा हमने पहले दे दिया है, और जहां भी खिलौने जब्त पाए जाते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है, और उसके बावजूद भी नहीं मानते तो जो लागत लगाते हैं खिलौनों सहित उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। Question number 93, Shri Birendra Prasad Basse, not present. Honorable Minister. I'm present. Oh, you are such a pleasant human being. How I missed you. I don't know, sir. I will seriously reflect on it. Please. Question number 93. Honorable Minister. सर, जवाब सभा पटल पर रख दिया गया है। Supplementary one, Honorable Member. Sir, I'm very proud to say that Union government sanctioned under the leadership of Honorable Prime Minister. Ask your question. There is 77,930 crore for 19 railway infrastructure development in northeastern region. This is the highest money allocation. What is your question, Honorable Member? This is related to very much question, sir. This is the highest number of money allotted by the Modi government in the northeastern region since independence. Sir, my question is very simple, sir. It is known to everybody. Due to the disaster in between Landing, Badarpur, Bodgos rail line. Sir, I will call upon you to focus on your question. Yeah, this is the question. Because other members also have to take up their questions. I want the Honorable Minister to pointedly respond. Yes, sir. And that can happen when you pointedly ask. Ask your question. My question is that in Landing, Badarpur, Bodgos line, there is a Hafrong railway station. Due to the disaster, many months railway was not connected, railway was not running due to the disaster, due to the poor quality of track or poor quality or not utilizing the modern technology. Now I want to know for Honorable Minister, can Modi government took some initiative to utilize modern technique to protect the hilly area? Honorable Minister. सर, आज जो अमृत काल का बजट है रेलवे का, आज आप तक ये का देखिए, अधिकतम। Honorable Minister, look at what a situation. You two are together virtually. हाँ सर। But it is through me. आज तक का सर्वाधिक बजट जो 2 लाख
60,200 करोड़ का जो बजट अमृतकाल का आया है, जो आज तक का रेलवे का सबसे अधिक बजट है। और आज अपने प्रधानमंत्री जो वंदे भारत, जो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए नए रेलवे की टेक्निक के साथ में आज 2 और वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। उनका जो सवाल है बहुत अच्छा है कि आज उन्होंने जो डिजास्टर के बारे में बोला, जो नई टेक्निक के बारे में बोला, तो सरकार ने तय किया है कि रेलवे ने नया रुख कर लिया है। जैसे आप जानते हैं कि रेलवे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे पुराना है, और जो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले ने नॉर्थ ईस्ट का रुख भी नहीं किया है, वहां तक रेल को नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज तक का सबसे सर्वाधिक बजट दिया और नई टेक्निक के साथ में, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो और उसके साथ में जो उन्होंने पूछा कि डिजास्टर के साथ में कैसे इकोसिस्टम से सरकार काम करती है, तो 2-3 मंत्रालय साथ में मिलकर काम करते हैं, जिसमें टेक्सटाइल मंत्रालय के जियो टेक्सटाइल का यूज करके जो लैंड स्लाइडिंग वगैरह होते हैं उनका यूज करके जो पुरानी लाइन है जो सोची गई है, जहां डिजास्टर हुआ है, तो अभी स्टैंडर्ड के साथ हम लोग आगे बढ़े। Honorable member, second supplementary. My second supplementary very straight, sir. Government allotted 77,000 crore for the infrastructure development of the northeastern region. Already, Railway Ministry has spent 30,000. They have targeting to finish 1,990 kilometer length of the railway track in northeastern end. But out of that, sir, only 30 kilometers has come. 30. Your question. My question is that they all till up to 2022, 409 kilometer length was constructed. Remaining length railway line will be constructed when and when presentation of budget will be fully utilized. Honorable Minister. जैसे उन्होंने बताया 49 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसमें 30,312 रुपये का खर्च हुआ, लेकिन आज तक जो 7 किलोमीटर की गति से काम होता था 2014 से पहले 4.16 किलोमीटर की गति से काम होता था, आज 7 किलोमीटर प्रतिदिन हो चुका है उसकी गति, और ये बढ़कर आने वाले 2022-23 में 12 किलोमीटर की प्रतिदिन हो जाएगी। तो उन्होंने जो सोचा है आज तक की तुलना में 2009 से 14 की तुलना में 190% ज्यादा लाइन का काम शुरू हो चुका है, उसका कमीशन हो चुका है, और जो प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बताया तो 19 प्रोजेक्ट जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, इसमें से 12 प्रोजेक्ट असम राज्य से संबंधित है। जैसे उनकी चिंता है कि उन्होंने आज तक देखा नहीं कि भाई नॉर्थ ईस्ट के तरफ भी कोई देखता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वांगनोन कोयनाक। Thank you, Chairman, sir. While expressing my gratitude to the Honorable Prime Minister and Railway Minister for commissioning new lines in the northeastern region, I would like to ask the Honorable Minister as to when the requisite approvals for the new lines will be completed, especially given in serial number 15, Dimapur to Tizit line. Thank you. Honorable Minister. सर, जैसे उन्होंने बताया है कि नॉर्थ ईस्ट के ये जो है मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में भी जो योजना हम लोगों ने शुरू करी है, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से। जो पहले के समय में रेल लाइन चलती थी, इसके बदले में जो हिली एरिया है इसके अंडर कंस्ट्रक्शन काम करके हम टनल के माध्यम से रेलवे को ले जा रहे। जिस तरह से उत्तराखंड में, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो उनकी वो सरकार के लिए गेम चेंजर होने वाला है, इसी तरह ये जो 7 सिस्टर्स है वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां जो ब्रिजेस है, जो हिली एरिया में काम करना होता है, तो बहुत सावधानी से अच्छे से गति से हमारा काम चल रहा है। और सबसे बड़ा ब्रिज जो अभी चेनाब का है, इसी तरह का एक ब्रिज वहां भी बनने जा रहा है। तो मैं उनको आश्वासन देती हूं कि उन्होंने जो प्रश्न पूछा है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो सही समय पे पूरा होगा। श्री कार्तिकेय शर्मा। जी से सवाल करना चाहता हूं कि रेलवे की मेजर अपग्रेडेशन योजना के तहत अब तक कितने प्रतिशत रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है और आगामी समय में इस योजना में हरियाणा के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया जाने की योजना प्रस्ताव। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, जैसे ये इससे संबंधित नहीं है प्रश्न, फिर भी मैं बता सकती हूँ कि जो अमृत स्टेशन जो 6वां प्रश्न है अपना, तो उसी समय में है कि सरकार ने तय किया है कि 1275 स्टेशन जो है उनको नया रूप देंगे, उनको एक बिजनेस सेंटर के तरफ दोनों तरफ से जैसे एक्सेस हो जाए। स्टेशन इज द हार्ट ऑफ द सिटी और प्रधानमंत्री जी के मन के नजदीक है, तो रेलवे में दोनों तरफ से एक्सेस हो जाए, बिजनेस सेंटर जैसा होता है, उनको पब्लिक एमिनिटीज के साथ में उनको फैसिलिटी मिले, इसके लिए हमने अमृत स्टेशन योजना बनाई है। इसके तहत ये काम भी शुरू हो जाएगा। डॉक्टर शांतनु सेन। Thank you, respected Chair, for allowing me to raise the supplementary question. Sir, as per record, since 2018 to 2022,
nearly 92,000 posts of Indian Railways have been abolished. Despite this abolition, still the vacancy is 2.998 lakhs. My humble question before my ministry, what is the stand of our ministry regarding the same? Thank you, sir. Honorable Minister. संबंधित नहीं है, उससे इससे संबंधित प्रश्न नहीं है, ये आसाम रेलवे प्रोजेक्ट से संबंधित प्रश्न है. In any case, the honorable member may get in touch with the honorable minister for the needful. Question number 94, Ms. Indu Bala Goswami. क्वेश्चन नंबर 94. Honorable Minister. माननीय सभापति जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया. Supplementary one, ma'am. धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत लघु उद्योग स्थापित करने पर किसान को ब्याज पर कितने प्रतिशत छूट दी जाएगी? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. माननीय प्रधानमंत्री जी की जो किसानों के प्रति सोच है और कृषि के अंदर इनकम बढ़ाने की जो सोच है, उसके अंदर जिस तरह से किसानों को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया कि किसान अपनी खुद की शॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट लगाकर और खुद वैल्यू एडिशन करके बेचे. इस दृष्टि से 2020 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना प्रारंभ की गई और इस योजना के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें क्रेडिट गारंटी की भी प्रावधान किया गया 2 करोड़ रुपए तक, और उसके साथ ही ब्याज छूट का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें 3% ब्याज की छूट रहेगी. अगर उसका किसान उस यूनिट लगाने के लिए अगर 8% या 7% का अगर ब्याज है तो उसको 3% ब्याज की छूट मिलेगी. और कुछ राज्यों ने इसके अंदर इनिशिएटिव लिया है जिन्होंने अपनी ओर से भी ब्याज में छूट दी है, जिसकी वजह से ये यूनिट अगर कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट या सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट लगाते हैं तो कई जगह पर 0% ब्याज पर भी ये यूनिट लगा सकते हैं. तो इस दृष्टि से ये योजना प्रारंभ की गई. Honorable member. Second supplementary. सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी, क्या किसानों किया गया है और साथ ही फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा भी कई ऐसी जिसमें अगर वो यूनिट लगाते हैं तो उसमें भी सब्सिडी का प्रावधान है. और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सब्सिडी के तौर पर जैसा कि अगर कोई यूनिट लगाता है तो उसके अंदर भी है, और सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट लगाता है तो, और उसमें जैसा कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की भी स्कीम है जिसमें प्रधानमंत्री कृषि संपदा स्कीम है, उसके अंदर अगर बड़ी यूनिट लगाता है तो उसके अंदर 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है. और छोटी यूनिट अगर वो लगाते हैं जिसमें लगभग 35, जिसमें ये PLI स्कीम भी है और प्रधानमंत्री कृषि संपदा स्कीम के अतिरिक्त PLI स्कीम है छोटे किसानों के लिए, तो उसमें भी 35% तक की सब्सिडी का प्रावधान है. और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के अंदर है तो उसमें 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. और FPO बनाते हैं अगर कोई किसान, तो FPO के अंदर भी किसानों को इसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जिससे कि आने वाले समय के अंदर गांवों के अंदर स्ट्रक्चर पहुंचे, गांवों के अंदर वैल्यू एडिशन करके किसान सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट लगा सके ताकि उसकी किसान की इनकम बढ़ सके. Thank you, Chairman sir. 1 lakh crore agricultural infrastructure fund is a revolutionary announcement of the government, and I compliment the government and the Honorable Prime Minister And mind for you, it. the compliment My question to you. one second. My The question. compliment is coming from one जिन्होंने सरपंच से संसद देखी है. Go ahead. Sir, the utilization of the fund in respect of some states is, however, low. So I would like to know from the Honorable Minister what is being done to increase credit offtake, and has a review been done in this regard? And specifically for the state of Andhra Pradesh, I would like to know from the Honorable Minister what is the total allotment and how much has been utilized by the state of Andhra Pradesh out of this infrastructure fund. Honorable Minister. Thank you, sir. माननीय सभापति महोदय जी,
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड का जो प्रावधान 1 लाख करोड़ रुपए का किया है, उसके अंदर अब लगभग प्रोजेक्ट जो आए हैं वो भी 22,000 प्रोजेक्ट देश भर के अंदर स्वीकृत किए गए हैं और उसमें लगभग 16,000 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत किए गए हैं और प्रोजेक्ट अपने स्थान पर काम करना भी प्रारंभ कर दिया गया है। और इसके अंदर हमने राज्यों को अलग से फंड का एलोकेशन किया है और राज्य सरकार की ओर से भी वो अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और अगर कोई इंडिविजुअल किसान है वो भी अगर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो वो, या प्रोजेक्ट कोई भी युवा साथी है तो वो लगाना चाहता है तो लगा सकता है। उसके लिए पोर्टल की व्यवस्था है, वो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट कर सकता है और निश्चित रूप से सभी राज्यों को अलॉट किया। और इसमें जैसा कि माननीय सदस्य ने आंध्र प्रदेश का कहा है तो आंध्र प्रदेश के अंदर भी प्रोजेक्ट है वो स्वीकृत हुए 1,900 प्रोजेक्ट है और उसमें 2,000 करोड़ रुपए तक का फंड एलोकेशन किया गया है। और जैसा कि माननीय सदस्य ने राज्य के लिए कहा है आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश के अंदर कुल बजट है वो 6,440 करोड़ रुपए का बजट है, वो उसके लिए विशेष एलोकेशन किया गया। और उसके अतिरिक्त अगर मान लो राज्य ने अधिक राज्य से प्रपोजल आते हैं तो उसके लिए राज्य सरकार अगर भेजती है तो उसके लिए भी भारत सरकार उसके अधिक करने के लिए भी तैयार है। श्री विजयपाल सिंह तोमर। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मान्यवर, कृषि आय बढ़ाने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया गया है 1 लाख करोड़ का। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस करीब 15% होता है और भंडारण के अभाव में करीब 25% अनाज सड़के चला जाता है। तो इस फंड के आने के बाद क्या कार्रवाई की गई है और कितना हमारे लॉसेस कम हुए, मीट आउट हुए? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय जी, ये सही है कि माननीय सदस्य जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और जिस तरह से लॉसेज की बात की है और इसको लेकर भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से कई प्रयास किए और जिस में ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बहुत बड़ा योगदान कर रहा है और जिसमें सरकार को भी, राज्य सरकारें हैं वो भी इस फंड का उपयोग कर सकती है और उसमें उसमें एक लिमिट भी नहीं है। 25 प्रोजेक्ट वैसे अगर कोई इंडिविजुअल लगाता है तो 25 लगा सकता है और इससे अधिक भी अगर कोई लगाना राज्य सरकार के लिए इसमें छूट है। एफपीओ है वो 25 से अधिक भी प्रोजेक्ट 2-2 करोड़ रुपए के लगा सकते हैं। और इसके लिए जैसा कि भंडारण की बात और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है तो राज्य सरकार ने, जैसा कि मैंने 2200 प्रोजेक्ट की 22,000 प्रोजेक्ट की बात की है जिसके अंदर 4,780 ऐसे प्रोजेक्ट है जो सिर्फ भंडारण के लिए और गोदाम के लिए देश भर के अंदर इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से स्वीकृत किए गए, जिसमें लगभग 8,200 करोड़ 26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ऐसे ही प्रसंस्करण के लिए भी 4,296 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट सैंक्शन किया जिसमें 2,900 करोड़ रुपए इसके अंदर भी खर्च हुए हैं। तो इस तरह से पूरे जो प्रोजेक्ट है, मैंने बताया आपको कि इसके अंदर 22,121 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए और निश्चित रूप से इसके अंदर सरकार की ओर से भी प्रयास है और लगातार इसको स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ही इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया और इसको राज्य सरकारों के माध्यम से और स्टार्टअप के तौर पर भी इसको काम में और युवा साथी वो भी अपने बिजनेस के तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक वाजपेयी। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से काफी अपेक्षाएं और काफी सारे प्रोजेक्ट सबमिट किए गए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना है, इसमें उत्तर प्रदेश में कितनी धनराशि के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं और आगे की इसमें जो कोल्ड चेन के लिए भी क्या कोई ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं जो स्टेट में कोल्ड चेन बनाने के लिए? थैंक यू। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, उप सभापति महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है तो उत्तर प्रदेश के लिए भी फंड का एलोकेशन किया गया है, सभी राज्यों के लिए किया गया है 1 लाख करोड़ में से। उसमें उत्तर प्रदेश के लिए 12,831 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
और इसके साथ ही आने वाले समय के अंदर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राज्य को अगर और आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार की ओर से उसको फंड को और बढ़ाया जा सकता है। और जैसा कि प्रसंस्करण की बात की गई है कि कितने प्रोजेक्ट प्रसंस्करण के लिए स्वीकृत किए गए हैं, तो प्रसंस्करण के लिए भी स्वीकृत किए गए हैं और दूसरे जो प्रोजेक्ट है उनके लिए भी स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंदर मैं आपको जो एग्जैक्ट डिटेल है वो मैं माननीय सदस्य को वैसे पहुंचा दूंगा, लेकिन फिर भी मैंने पहले कहा कि प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए राज्य का स्पेशल तो अभी पहुंचा दिया जाएगा आपके पास में, लेकिन जो देश भर का है उसके अंदर 4,200 और छिने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए और जिसमें 2,900 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए गए। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 और 100 दोनों एक ही नेचर के हैं, इसलिए वी आर टेकिंग टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 95, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स जी। सर क्वेश्चन नंबर 95 माननीय मंत्री जी पटल पर रख दिया गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय डीपी वत्स जी। माननीय मंत्री जी, एलएसडी में आप 8.5 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन दे चुके हैं। 1,85,000 के करीब कैटल पेरिश्ड और 32.5 लाख के करीब इन्फेक्शन हुआ। मैं जानना चाहता हूं इसके लिए जैसे आपके फुट एंड माउथ डिजीज के लिए नेटवर्क प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट, क्या एलएसडी के लिए भी कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है? थैंक यू माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, एलएसडी चूंकि बिल्कुल नई बीमारी है, 2019 में पहली बार इस देश में आई है और 19 के बाद 20-21 में इतना इसका स्प्रेड नहीं था, 22 में जितना हुआ है। अब ये भी वैसे तो इसमें गोट पॉक्स वैक्सीन हम लगातार लगाते रहे हैं, लेकिन आईसीआर में कई रिसर्च प्रोजेक्ट इसके ऊपर चल रहे हैं और अभी आईसीआर के द्वारा एक नई वैक्सीन जो इंडिजिनस है बिल्कुल वो लॉन्च की गई है। 3 कंपनियों ने वो ली भी है और उसके ट्रायल चल रहे हैं इस समय पे IVRI बरेली में। मुझे उम्मीद है कि ट्रायल के रिजल्ट बहुत जल्दी आने के बाद कमर्शलाइज होगी। उसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट इसके ऊपर रिसर्च इसके ऊपर जारी है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। मंत्री जी, हिसार में बना हुआ एक वैक्सीन कहते हैं दुनिया का बेस्ट वैक्सीन है, क्या इसको एक्सपोर्ट करने की कोई प्लानिंग है? धन्यवाद। जो वैक्सीन आईसीआर ने बनाया हिसार में, जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, वो 3 कंपनियों ने उसको लिया है, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेटाइज किया जा चुका है, लेकिन वो भी ट्रायल के तौर पे। जब तक उसका ट्रायल IVRI बरेली उसको रिकमेंड नहीं करेगा, ना तो उसकी देश में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। पहले देश में मैन्युफैक्चर शुरू हो एक बार ट्रायल के बाद, रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि देश के दूसरे हिस्सों में इसको एक्सपोर्ट हम कर पाएंगे। धन्यवाद। माननीय हरनाथ सिंह यादव जी, क्वेश्चन नंबर 100। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 100 उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। पहला सप्लीमेंट्री पॉइंटेड। माननीय सभापति जी, मैं 1 मिनट अतिरिक्त लूंगा आपसे। नहीं, आप पॉइंटेड सवाल पूछे। नहीं मान्यवर, जरूरी है सवाल से भी नहीं, सारे वो है तो मैं मान्यवर मैं इतना प्लीज पॉइंटेड हो जाए, इतनी देर में हो जाता। कहा पॉइंटेड सवाल। मान्यवर, दुनिया के लाखों करोड़ों जीवों में गाय एकमात्र ऐसा जीव है जिसका दूध तो अमृत समान होता ही है, उसका मूत्र तथा मल भी गुणों की खान होता है, जो अनेक असाध्य रोगों में छुटकारा दिलाता है। माननीय मंत्री जी ने जो लंपी त्वचा रोग के बारे में जो उत्तर दिया है उसमें गौ माता को गौ पशु लिखा है, जो बेहद आपत्तिजनक है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको ठीक करने को। धन्यवाद। अब मेरा सवाल है, नो प्लीज माननीय मंत्री, माननीय मेरा 1 मिनट का सवाल, 1 मिनट का। नो 1 मिनट नहीं प्लीज माननीय मंत्री प्लीज। ये सच है कि देश में गाय को माता माना जाता है और गौ माता कहा जाता है, लेकिन जो सरकारी जवाब है उसमें इसी तरह से जाता है। हमारी भावनाएं अलग हो सकती है, लेकिन सरकारी जवाब थोड़ा अलग होता है। माननीय सदस्यगण और माननीय मंत्रीगण, बहुत साफ कई बार माननीय चेयरमैन ने कहा है कि पॉइंटेड सवाल और पॉइंटेड आंसर, इसलिए प्लीज कृपया इसका पालन करें। जी। सेकंड सप्लीमेंट्री। महोदय, पूरे देश में लंपी त्वचा रोग से 1,84,653 पशुओं की मृत्यु हुई है,
जिसमें सर्वाधिक संख्या 76,030 राजस्थान की है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार राज्यों से मिलकर किसानों की हुई जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेंगे? धन्यवाद। माननीय सभापति जी, ऐसी कोई योजना नहीं है। कुछ प्रदेश सरकारें अपनी तरफ से जो डेथ हुई हैं उनको कंपनसेशन जरूर दे रही हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक। केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह की कोई योजना नहीं है। धन्यवाद। सप्लीमेंट्री ऑन क्वेश्चन नंबर 95, माननीय जुगल सिंह लोखंडवाला। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह मंत्रालय द्वारा दूध की काफी सारी उत्पत्ति हुई है, पर आज की तारीख में भी देखते होंगे कि दूध और दूध की प्रोडक्ट का भाव बढ़ रहा है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए कोई सुझाव आप रख सकते हैं या कुछ किया है उसके बारे में बता सकते हैं माननीय मंत्री जी? धन्यवाद। पिछले कुछ समय से दूध की कीमतें बढ़ी हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शायद इस देश में किसान या मजदूर जो ज्यादातर इस फील्ड में हैं, अगर 100 रुपए का दूध बिक रहा है तो 75 रुपए किसान के पास जाते हैं। किसी और फील्ड में ऐसा नहीं है। किसी भी आप सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर में भी कहीं ऐसा नहीं है कि 75% हिस्सा किसान के पास जाए। पिछले कुछ दिनों से फोडर की और फीड की कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से दूध की कीमतें बढ़ी हैं। अगर वो कीमतें नीचे आती है तो स्वाभाविक रूप से दूध की कीमतें नीचे आएंगी। और मैंने पहले भी कहा है कि कम से कम किसान को भी इतना मिलना चाहिए कि वो आगे कम से कम डेयरी या इस फील्ड में जाता रहे। अगर हम कंज्यूमर की थोड़ी सोचते रहेंगे ज्यादा, एक बैलेंस बनना जरूरी है, तो मुझे लगता है इतनी अभी चिंता की कोई बात नहीं है। दूध का उत्पादन भी बढ़ रहा है और ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होगा। जब कीमतें नीचे आएंगी फीड एंड पाउडर की, दूध की कीमतें स्वाभाविक रूप से धन्यवाद। नीचे आएंगी। श्रीमती सीमा द्विवेदी। जी महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ, ऐसे भी लंपी रोग की बात आई कि बहुत सारे पशु मर गए, तो महोदय मेरा सरकार से एक माननीय मंत्री से मैं जानना चाहती हूँ, क्या ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय नहीं, ब्लॉक स्तरीय ऐसी कोई टीम बनाएंगे जो गांव-गांव में सर्वे के आधार पर ऐसे पशुओं को चिन्हित करें ताकि बीमारी आगे ना हो? ये मैं जानना चाहती हूँ। आपका सुझाव है माननीय मंत्री जी? और हमारे यहाँ भी केंद्र सरकार में मंत्रालय की तरफ से कंट्रोल रूम बनाया गया है। हम सब प्रदेश सरकार पर संपर्क में लगातार रहते हैं और प्रदेश सरकारों ने जिले स्तर पे भी और ब्लॉक स्तर पे भी टीम भी है, और जहां कहीं से ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो केंद्रीय टीम भी वहां पर पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 95 और क्वेश्चन नंबर 100 पे कोई सप्लीमेंट्री नहीं है, इसलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 96, माननीय राकेश सिन्हा जी। क्वेश्चन नंबर 96, माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने डीकोलोनाइजेशन की बात कही है, उसका प्रभाव इस देश की समाज और विचारों पर पड़ रहा है, तो ऐसे कुछ स्टेशन हैं जिनका नाम ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीयों के प्रति कंटेम्प्ट के कारण रखा था, जिनमें से एक स्टेशन बिहार के सोनपुर डिवीजन में बरौनी फ्लैग है। उस फ्लैग का नाम इसलिए रखा गया था कि स्थानीय लोग जब उस पर चढ़े तो फ्लैग के साथ चढ़े। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या इस स्टेशन का नाम बदलकर इस अमृत काल में या राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर या बरौनी ग्राम के नाम पर रखा जाएगा? सुझाव मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से प्रपोजल आएंगे तो हम सोचेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय राकेश जी। उपसभापति महोदय, कुछ ऐसे स्टेशन होते हैं जो यद्यपि जिला केंद्र है लेकिन औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हुआ है। उसमें एक बेगूसराय है जिसमें प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से एनटीपीसी और फर्टिलाइजर के बड़े फैक्ट्रीज लगे हैं। ऐसे स्टेशनों को महानगरों से जोड़ना आवश्यक है, अन्यथा व्यापार पर मैं उसमें एक पंक्ति जोड़ दूं, चूंकि इसका प्रभाव नेशनल हाईवे पर पड़ता है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या बेगूसराय स्टेशन को औद्योगिक नगर के रूप में देखते हुए सरकार एग्जामिन करेगी?
प्रश्न पूछा है अमृत स्टेशन के बारे में, और अमृत स्टेशन जो अभी 1275 तय किए गए हैं, इसी के कारण इसमें जो सुविधा होनी चाहिए वो सब हम उपलब्ध कराएंगे। और कनेक्टिविटी की जो बात है, इसमें सरकार ने, रेल मंत्रालय ने ऐसा सोचा है कि फ्रेट के लिए ज्यादा यूज हो जाए, और जहां औद्योगिक सेंटर है वहां फ्रेट का यूज ज्यादा हो, इसके लिए डबलिंग करना, उसका केबलिंग काम होना, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना। जो पुराने, जो आप जानते हैं, जैसे बिहार से कई मंत्रियों ने कई डिक्लेरेशन किए, लेकिन काम नहीं हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितना बजट आएगा उसके हिसाब से काम गति से चल रहा है, और आगे वाले समय में ये कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। धन्यवाद। महाराजा साना जवाल लेइसम्बा। Sir, I express my thanks and gratitude to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Minister of Railways Please question. Sir, for including Imphal, Manipur under Amrit Bharat station. Sir, my question is whether the said project is taken up or not, and when will it be completed? Sir? धन्यवाद। Thank you. माननीय मंत्री। सर मैं समझ नहीं पाई। Repeat your question. Repeat your question, please. My question is whether the said project Imphal, Manipur under Amrit Bharat station is taken up or not, and when will it be completed? हाँ सर, जितने स्टेशन का चयन किया गया है, 1275 स्टेशन अमृत भारत योजना में लाई गई है, और इसके लिए 7,332 करोड़ का खर्चा रेलवे में, जो अब तक 7,332 स्टेशन से, इसमें से 1275 स्टेशन के ऊपर अमृत भारत योजना लाई गई है, और इसमें 13,375 करोड़ रुपए का आवंटन भी हो चुका है। तो जिस तरह से 8 जोन में ये काम बांटा गया है, और मैंने पहले भी बताया कि स्टेशन का क्या, अमृत स्टेशन में क्या हो सकता है, तो शहर के दोनों तरफ से उसको जोड़ना, उसको सस्टेनेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन लाना, दिव्यांग जनों की सुविधा, उनको स्टेशन पर सिटी सेंटर के तरह निर्माण किया जाना, तो ये सब सुविधा के साथ में उनका डेवलप होगा। धन्यवाद। माननीय दर्शना सिंह जी। माननीय दर्शना सिंह, प्लीज। धन्यवाद उपसभापति महोदय जी, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? धन्यवाद। सर इसमें लिस्ट शामिल की गई है, लेकिन आज जो उन्होंने प्रश्न पूछा है, इसके संदर्भ में मैं इतना बता सकती हूँ कि 1275 स्टेशन जो है, इसमें से उत्तर प्रदेश के कई बड़े स्टेशन को शामिल किया गया है। आप कुल संख्या बाद में माननीय मंत्री जी बता सकती हैं उन्हें, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है। नहीं उपलब्ध है मेरे पास। तो आप और टोटल इसमें से उन्होंने जो पूछा है कि अमृत भारत स्टेशन में जितने बड़े स्टेशन है, वो स्टेशन भी शामिल है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 97 श्रीमती जेवी माथेर हिसम। नॉट माननीय मंत्री जी, स्टेटमेंट। सप्लीमेंट्री डॉक्टर अनिल बोंडे प्लीज। धन्यवाद उपसभापति जी। जो एमएनसी क्लोज हुए हैं, वो एमएनसी क्लोज होने के कारण रोजगार के ऊपर क्या असर हुआ है, और नए एमएनसी लाकर रोजगार बढ़ाने के लिए शासन की क्या योजना है? थैंक यू। माननीय मंत्री जी। सर जैसे क्वेश्चन के आंसर में बताया गया है, देयर आर नंबर ऑफ रीजन से नॉर्मल प्रक्रिया है, कुछ जो एमएनसी बंद होते हैं, कुछ खुलते हैं। टोटल जो बंद हुए हैं वो 1330 है, उसमें से 313 फॉरेन कंपनीज है, उनकी सब्सिडी 1017 है। और मुझे बताते हुए ये खुशी है कि उसके मुकाबले में 4994 नई खुली हैं, ये 376% नतीज है। बहुत एमएनसी खुली हैं और उससे एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा मिलेगी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 98 श्री अजय प्रताप सिंह। माननीय अजय प्रताप सिंह। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय अजय जी, पहला सवाल पॉइंटेड सवाल। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केंद्र प्रायोजित PMFME योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को गत वित्तीय वर्ष में कितना आवंटन दिया गया था, और उसके माध्यम से कितनी प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित हुई है? धन्यवाद।
माननीय उपसभापति महोदय, ये योजना बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री जी ने जब बजट में घोषणा की थी तो 5 वर्षों में हमें 10,000 करोड़ रुपया देश में खर्च करने थे। ये तीसरा वर्ष चल रहा है और इसमें व्यक्तिगत, समूह, सोसाइटी और एफपीओ कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। लेकिन एक विस्तारित योजना में 3-4 चीजें उसमें सामने आती हैं जो माननीय सदस्य ने पूछी हैं। उसमें इक्वेशन सेंटर की बात भी है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको पैसे भी देने हैं। तो जो उन्हें राज्य का पूछा है, 113 करोड़ रुपया राज्य को दिए गए हैं और अभी तक जो